Would you please introduce yourself? Yes, sir. So my name is Ayes Chuktai and I am a resident of Multan. I did my matriculation and intermediate from Army Public School Multan and City Science College Multan. After that, I started my bachelor's in electrical engineering and I completed that in 2018. After that, sir, for 2 years, I was preparing for various government job exams, and alongside, I started my master's in electrical engineering. I stood first in my batch, and because of that, I was offered a position at a university, which I am serving currently as a graduate research assistant during yes. Your field of interest. So basically, I have studied courses related to power engineering. So as such, a whole power is my field of interest. What do you feel about the present situation in Pakistan regarding the power supply, its failures? What are the possible reasons for that? So currently, the topmost problem here in the energy sector is circular depth. Sir, it is actually um, a depth which goes in a circle. Like if we have lots of power plants in the country that run on furnace oil, and we export that oil from other countries like Saudi Arabia. Import or export? We import that oil in our country. That oil is imported on loan payments basically. Like PSO Pakistan State Oil imports oil from those companies or from Saudi Arabia, and then it sells that oil to the IPPs. IPPs are basically independent power producers that produce the power, and basically they sell the energy or they sell the power to transmission and distribution companies, which then supply the power to the consumers. Now the consumers don't pay the bills on time, or they are not able to recover that amount of money from which the oil was initially imported in the country due to the line losses and all that, and most of the people don't pay their bills on time, and for that reason this circular depth has increased to I think 7.4 trillion right now in the country. This is the most difficult problem in the power sector right now. The second most difficult problems are in the power sector is that there is no infrastructure for renewable energy, as coal and fossil fuels produce a lot of noise and air pollution, and because of that, uh, there are a lot of diseases in the atmosphere, as for example smog. So the country should move towards renewable energy. On the technical side, what are the main reasons for failure in the country, failure of electricity supply in the country? So on the technical side, the first problem is of infrastructure, that the transmission lines, the power plants, they are very old and they are not new. They are not designed properly. New structures are need to be incorporated in the country. And second was, sir, the world is moving towards green energy sources. Like it's also called clean energy, and we are lagging far behind in that field as well. So I think if we move towards green energy sources and renewable energies, we would be able to cope the problem of the power sector at a large scale. The infrastructure you have talked about, Yes. and the alternative sources of energy that we are introduced to that, how we can reduce the expenses on the infrastructure if we adopt these alternative sources of energy. That if we will use the renewable energy sources like the solar and the wind, so the cost will automatically get reduced, because there would not be a need to implement these power sources. There we will not have to import anything from the other countries, as wind and solar and water as well are abundantly available in the country. So the cost of operation would greatly reduce, and resultantly, the bills would go down. You will not need large infrastructure to supply that energy produced through alternative sources of energy. Yes.
that will be produced locally and will be supplied locally. Yes, exactly. So infrastructure will be much. Sir, Sir, thank you. Gentlemen, I would like to be bilingual as well. Haris, क्या priorities हैं आपकी if you get selected इंशाल्लाह? तो priorities क्या होंगी इस group में आप रहना चाहते हैं? Sir, if you're talking about the CSS Civil Services Exam, I would like to go for the Pakistan Foreign Services. And my second priority would be Pakistan Administrative Services. Why foreign service is your top priority? Sir, I basically like the idea of international politics, international relations, like relations with other countries. This topic intrigues me a lot. क्या subjects थे आपके elective? Sir, basically electives में मेरे थे criminology, gender studies, then Punjabi, and international relations and physics. Okay, fine. So why a civil servant is called a civil servant? There are two kinds of basically there are government servants as well, and there are civil servants. There are federal servants and civil servants. There's a police department, which is like which comes in the forces, the army, navy, and the police. These are the forces. And civil servants are called civil servants because they are related to civil matters in the country. That's why basically they are called civil. Civil matters से क्या मुराद है? सर सिविल मैटर्स से सर मुराद हो सकती है जैसे जो कॉमन मैन के इश्यूज होते हैं, पॉलिसी मेकिंग होती है कंट्री की, जो सिविल बेस से मतलब अफेक्ट करे कंट्री को. तो आई थिंक मेरे ओपिनियन में सर वो गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट में क्या डिफरेंस? सर गवर्नमेंट सर्वेंट फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं. पब्लिक सर्वेंट सर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, हमारी इंस्टीट्यूशन हो सकती हैं पब्लिक सेक्टर की, उनको हम पब्लिक सेक्टर सर्विंग कहते हैं. और प्राइवेट में सर जो काम करते हैं वो प्राइवेटली ओन कंपनीज के अंदर एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं. probably you are confusing the things. यस सर, आई माइंड. Civil servant, purely the government servants, provincial or federal, working in the government departments. Universities and the other organizations, like organizations, these are basically government managed organizations. Yes, That's why they are not called the civil servants. government. Although it's government managed means that the government is naturally contributing as far as the finances are concerned. Part of that is being earned by themselves. So this is and public means government. Public policy means public government policy. Public finance means government finance. Public doesn't mean the general public. And please continue. आपने इंटरनेशनल लॉ रिलेशंस भी रखा, यूक्रेन इशू को कैसे देख रहे हैं? सर यूक्रेन का इशू बेसिकली डेट बैक करता है एक नेटो के साथ, नेशनल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, एक मिलिट्री अलायंस है बेसिकली. तो यूक्रेन इसका पार्ट बनना चाहता था बेसिकली, उसने अप्लाई भी किया था इसके लिए. रशिया नहीं चाहता कि ये इसका पार्ट बने. I'm not asking about this background. मुझे इसका जो रिजल्ट्स हैं क्या देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड, क्या इसके रिजल्ट्स हैं, क्या इम्पैक्ट हो? तो सबसे पहले तो काफी चीजें मतलब यूक्रेन से इंपोर्ट होती थी, ऑयल की इंपोर्ट भी थी वहां से, और कुछ मतलब चीजों की इंपोर्ट भी मतलब उसमें इश्यूज आए. नंबर वन इशू तो ये था. दूसरा सर इसके जो रिजल्ट्स हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि एट द एंड सर ये कोल्ड वॉर ही है, मतलब यूएस और रशिया के दरम्यान में, क्योंकि यूक्रेन को बेसिकली सपोर्ट यूएस ही कर रहा है पीछे से, एज वो सामने आके नहीं फाइट कर रहा, उसे वेपन सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को बेसिकली. तो ये फाइट हम ऐसे भी कह सकते हैं सर कि वो रशिया और यूएसए की फाइट एक तरह से, और फिर आइडियोलॉजीज की फाइट भी हो सकती है. इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं. लॉन्ग टर्म में सर हम कह सकते हैं कि रशिया इस वॉर को जीत भी सकता है और यूक्रेन को मतलब इस पे बहुत नुकसान होगा. एट द एंड सर यूएसए की जो यूक्रेन की टेरिटरीज हैं वो रशिया में मतलब इंक्लूड कर दी जाएंगी. जब आप उसको कोल्ड वॉर कह रहे हैं तो कोल्ड वॉर का कोई रिजल्ट निकलता है? आपने बीच में कह दी कि इसको जीत भी सकता है, जीत से क्या मतलब है?
सर बेसिकली उनकी जो रशिया बेसिकली चाहता है कि उसकी जो आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म की वो एक्सपेंड करे जितना वो एक्सपेंड करना चाहते हैं उसे। तो जीतने से सर यहाँ ये मुराद है कि उनकी आइडियोलॉजी ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो दुनिया के अंदर। देखिए बेटा, बात यह है कि वी हैव टू प्रोसीड इन अ सीक्वेंस। when we are उन्होंने क्वेश्चन किया है वो बड़ा डीप रूटेड है। उसमें सबसे पहली बात जो आपके ध्यान में आनी चाहिए वो ये है, आफ्टर dissolving of the Soviet Union, the states which were separately designated as independent countries, smaller and larger. Ukraine was one of them. So, under the international law, no big power would like to share the border with another warring country or the big country. All those countries which are on the west or in the south or in the north of Ukraine, they have become part of NATO. Yes. True? True, sir. Excluding Belarus. If the Ukraine joins NATO, which was the demand and attraction from the West, then the border of the Russia and Ukraine will be the common, which is not like, historically speaking, when there was rule of Britishers in Indo-Pak subcontinent and in Afghanistan partly, even at that time, artificially Wakhan corridor was carved out so that the British ruled country was not sharing with this country, Russia. So they would never, this was the basis because it is thought that there will be a potential threat all the times from the agonistic country on the other side, and their border would not be the safe. This was the primary issue for the Russians. That's why they did not like that the Ukraine should join NATO. That was the beginning. But because of the attraction from the West, the Ukrainian government or their rulers, they were inclined to join NATO. This was the basic point, which could not be. Now, after this war, America is pleasing Russia. Yes. Is not directly in context as far as the war is concerned. Yes. तो वो तो ये चाहेगा जितनी लंबी खींच सकता है उसको कमजोर होता जाएगा। इफेक्ट अमेरिका तो दूर बैठा हुआ है ना, जो हार्ड हिट है वो स्मॉलर कंट्रीज हैं जो बॉर्डर पे हैं, किसी वक्त उन पे भी रूस का हमला हो सकता है। मसलन मालदोवा पे आजकल खास तौर पे, जॉर्जिया पे वो ऑलरेडी कर चुका है, उसका एक इलाका इंडिपेंडेंट था अबखाजिया पे वो कब्जा कर चुका हुआ है रशिया ऑलरेडी। So there is all the time there is a potential threat from the Russian side to attack on the smaller countries, including Poland. Right. चलिए, sir, और बात How do you see the current political situation in Pakistan, and what do you suggest to come out of this situation? So currently, I think there is a situation of bad governance and a lack of good governance in the Good. country. So good governance includes four things. Number one is participation. Number two is transparency. Number three, accountability. And the fourth point that I cannot recall right now. It is not the linear order. It is basically the rule of law on the top. Rule of law. Then Then comes transparency, accountability. That results to transparency. And finally, participation. the participation of the people on the different fora to express themselves Yes. regarding their issues and the problems. Rule of law is on the top. Yes. Continue, please. And so these things have to be improved in the country one by one. Like there should be a proper rule of law in the country, first of all, that no person is above the law. It basically states this. Then, sir, if no person would be above the law, then all persons will abide by the rules of the country, and it would automatically say that there's an accountability in the country for everything.
and every person will be accountable for the offense he does in the country. And this would just automatically result in a transparent, and we will have a transparent country. And everyone would then participate on every forums as well as Sir discussed. The country should have a good governance in the basically in the country. करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को जब डिस्कस किया जाता है तो उसमें एक बात ये भी डिस्कस की जाती है कि इदारे अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर चले जाते हैं. हाउ डू यू सी इट? सर जैसे अभी करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, कुछ सर इदारे इस तरह से अपनी लाइन से बाहर जाते हैं कि वो मतलब जो मनी होते हैं, रिच पीपल होते हैं, उनको फेवर कर रहे होते हैं, वो जिनको सजा देनी चाहिए, जिसके ऊपर जिस जो ऑफेंस की उस पर दे नहीं पाते उन्हें, और उस पर उनको मतलब फेवर दे रहे होते हैं उन्हें, जो नहीं देनी चाहिए उन्हें. वो आउट ऑफ वे जाके उनकी हेल्प कर रहे होते हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अंडर प्रेशर भी होते हैं उनके अथॉरिटीज के अंडर. तो इस और अपने जो उनके एक्ट्स डिफाइंड होते हैं उन इदारों के, उनसे जो आपने पहले 4 इंग्रेडिएंट्स बताए उनमें से किस में ये फॉल करती है ये बात? सर ये रूल ऑफ लॉ में फॉल रूल ऑफ करती लॉ है. देखिए सीक्वेंस में आप थोड़ा सा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सबका. There are institutions which are weaker, the others are stronger. Some are disorganized, the others are well organized. Yes, sir. Those institutions which are weak, although they have got the defined power in the constitution provided in the country, all the institutions, 3, 4, 5. Now, the weaker constitution, the institutions, they leave the space, create the vacuum because of lack of competence, Yes, because of their weaknesses. So the space which is located, it's occupied the by vacuum created, that is occupied by the stronger and the well-organized institution. Similarly, the power is automatically transferred to that institution. So in our country, it is the same thing which is going on since long. ठीक है ना, इसको आपने बोला नहीं, इस बात को उसी सीक्वेंस में बात करें. क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आप सजेस्ट करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज? जो आपका आपका प्रायोरिटी है फॉरेन अफेयर्स, उसके हवाले से क्या रिफॉर्म्स आप समझते हैं कि होने चाहिए? नंबर 1 तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर तो बेसिकली ये सवाल मैंने तैयार नहीं किए हुए, क्योंकि सिविल सर्विस के बारे में तो मैं मतलब अपनी ओपिनियन के साथ में बात ये है, ये अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ने जॉन कैरी ने कहा था इंडिया में, it is the economic strength of a country which determines the strength of a country. और साथ ही उसने कहा कि इंडिया इज इंडिया एंड पाकिस्तान इज पाकिस्तान. It's the economic strength that determines the foreign policy. ये जवाब है सर की बात है. तो उसके लिए जो है मतलब ये इंडिविजुअली someone goes there in embassy, उस हवाले से बात करना होगी कि आप वहां जाकर के इस चीज को कैसे एड्रेस करेंगे. उसमें बेस्ट वे जो है वो यही होता है, फॉरेन ट्रेड जो है उसको आप ऑब्जर्व करेंगे. आई हैव सीन दैट इन पोर्चुगल. Afghanistan was the ambassador, small country, and the Pakistan trade with Portugal was on the plus side. We were importing less and exporting much there. That was the effort. So that you can do there. So when export from the country goes high, basically you earn the foreign exchange, and which is all the time needed in the country. सर ये बात करने लगे हैं आप, इस बात को दाएं बाएं की बात नहीं करनी है. You have to should have some solid ground for that. घबराना भी नहीं सर. ऑब्वियसली जब मैं इसको मतलब प्रॉपर्ली पढ़ूंगा ऐसे CSS को,
You opted for Punjabi. जी सर, You want to opt. जैसे कि I want to पंजाब। And why? Sir, basically scoring trends को basically observe the scoring trends in the subject and then consulted with my mentors as well, and they said that you should go for this subject from this group. No, no. You are an independent man, grown up a person. Yes, You should say it's my liking. I like the Punjabi literature. तो कोई पंजाबी में आप तो अभी तो पढ़ा ही होगा या पढ़ना है अभी? but अभी पढ़ना है। चलिए, एक उसका क्लासिकल पार्ट है, एक जो है मौजूदा जो दौर है उसी हिसाब से लिखारी जो है पुराने लिखने वाले और नए लिखने वाले, इसमें खास तौर पे जिन्हें हम पंजाबी के सेक्रेड में इशार कहते हैं, ये टर्म है सेक्रेड में इशार, उसमें क्लासिकल शुरा है yes, sir. और फिर एडवांस। क्लासिकल शुरा जो है उनका कलाम, उनमें फिर जो नजरिया है वाक़िअतुल वजूद का और वाक़िअतुल शहूद का, उसके बारे में है कुछ आपकी? पढ़ी नहीं है तो उनके क्या अभी बात नहीं करें? आई स्टडी। चले, तो अब ये ना कहें हाई स्कोरिंग है या लो स्कोरिंग वाली बात नहीं, इट शुड बी, इट इज बाय टेस्ट। वैसे वादुल वजूद और वादुल शहूद के बारे में आप जानते हैं? नहीं सर, इसका आइडिया नहीं। होना चाहिए, वैसे इसका पंजाबी से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे नहीं, वो शुरा की बात हो रही है ना, क्लासिकल शुरा, ये तो हर सब्जेक्ट में उर्दू और हर चीज वो में है। जैसे मतलब पंजाबी शुरा वो एक ये क्लास है, क्लास बाबुल शाह है, शाह हुसैन है, मतलब ये है सुल्तान बाहू है, बाबुल शाह है, तो ये बाबा गुलाम फरीद है, ये सारे वाक़िअतुल वजूद के जो है वो पैरोकार कह लें या उसको मानने वाले आप कह लें। वाक़िअतुल वजूद का मतलब कि अपने आप की नफी करना, अपने आप की बिल्कुल नफी कर देना, वो उनके कलाम से मुतरश्शे है कि मसलन बुलिया के जाना मैं तो ना मैं मोहम्मद विच मसीता, ना मैं विच कुफर रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुलिया के जाना मैं तो। एक हो गया सुल्तान बाहू, ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, ना मैं मुल्ला काजी हूँ, ना मैं तेरे रोजे रखे, ना मैं पाक नमाजी हूँ, ना दिल दोजख मंगे मेरा, मैं शौक बहिश्ती राजी हूँ, 5 साल रमजे बाहू और सवा टूटी बाजी हूँ। रिलेशन हो गए शाह हुसैन, रब्बा मेरे दिल दा मारन तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, रूम रूम भी तू है ताना तू है बाना, मेरा सब कुछ तू है, आप हुसैन फकीर ने माना मैं नहीं, सब तू है। देखें ना, यूनिफॉर्मिटी आ रही है सेल्फ नेगेशन की, ठीक है ना। तो ये है वाक़िअतुल वजूद। वाक़िअतुल शहूद जो है वो मज़ाहिर कुदरत जो है उनके हवाले से फिर वो बात करती है। चले, मैं लग रहा था उसमें तफसील में नहीं जाने लगा था, बहुत सारे लोग इसमें फंसे रहे थे। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, वाक़िअतुल शहूद और वाक़िअतुल वजूद के मामले में अल्लामा इकबाल भी काफी टाइम हाँ जी। गेज रहे इन चीजों में। चलिए सर, और पूछें कोई? बेटा जरा, यू हैव टू बी आर्टिकुलेटेड, जो बात करें ना, अभी देखिए ना हमने गुड गवर्नेंस की वो बता तो दी, लेकिन उनका सीक्वेंस जो था वो कुछ और था, पर जो सबसे अहम थी वो आपने कहा कि मेरी याद नहीं है, और वो था रूल ऑफ लॉ। ठीक है ना, जरा उसको उसकी तरफ गौर करें और इनको थोड़ा देखें। अपने सब्जेक्ट्स इंटरनेशनल रिलेशंस, पंजाबी और क्या बताया? फिजिक्स इस रखूंगा मैं, जब मैं मतलब सिलेक्ट करूंगा सब्जेक्ट्स, तब मैं ये सब्जेक्ट्स रखूंगा, फिजिक्स रखूंगा, इंटरनेशनल रिलेशंस, क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज। इट इज बेटर टू कॉन्टेक्ट दिस अकेडमी, आप खुद ना करें, ये मेरी आपको एडवाइस होगी। जी जी और वैसे तो आदमी जो है वो, आप क्योंकि इंजीनियर हैं, आप कहते हैं कि फिजिक्स कुछ पढ़ी हुई है, वो बात नहीं है। अनटिल अनलेस आप वो देखें जो पेपर में आ रहे हैं सवाल, वो प्योरली साइंस के हैं, जनरल नहीं है। अनटिल अनलेस आपकी डीप उसमें स्टडी नहीं है तो उसमें फंस जाता है आदमी, ठीक है ना, सिलेक्शन में। तो अभी तो आप इसकी बात करें, आप उनकी तरफ उसकी बात ही ना करें इंटरव्यू में
CSS की है, वो कहेंगे जी वन इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। हाँ सर, ऑब्वियसली वहां तो मैं हाँ, वहाँ ये बिल्कुल बात नहीं करनी। वहां पे नहीं कहूंगा। हाँ जी, जो सर प्लीज। वाकई में राज क्या लेसन हमें देता है और उसका क्या फलसफा है? फिर वाकई में राज में हमें नमाजें 5 फर्ज हुई थी उस वाकई के हिसाब से। और बेसिकली फलसफा तो यही था सर कि मुसलमान को 5 वक्त की नमाजें पढ़नी चाहिए। इस वाकई से ये चीज मतलब फर्ज हुई। सर प्लीज। बात ये है, साइंटिफिकली स्पीकिंग वाकई में राज जो है वो प्रूवन है, आप इंजीनियर है ना। कैसे? जब मिराज पे तशरीफ ले गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करने के बाद, और जब वापस आए तो पानी अभी चल रहा था और वो दरवाजे की कुंडी जो थी वो हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। वापस आ गए मिराज से। आपके साइंस में ये है कि देन द स्पीड ऑफ an object increases from speed of light. टाइम स्टॉप। Time stops. यस सर। Scientifically speaking, it's proven. यहाँ से आप बात शुरू करिए, ठीक है। उसके बाद है कि ये अल्लाह ताला ने तलब किया मुलाकात के लिए। फरिश्ते भी, जिब्राइल भी एक जगह पे रुक गया कि बस मेरे यहाँ तक पहुंच सिदरतुल मुंतहा। उसके बाद फिर कुरान मजीद में आया है कि फासला जो है वो कमान से भी कम रह गया। फिर वहां से जो है जो बातचीत हुई उनमें हिदायत मिली। तो फिर वो वापस आए, फिर हज़रत मूसा से मुलाकात हुई, मतलब ये इतना बर्डन कहते मेरे लोग नहीं कर। वापस गए, फिर आए, फिर वापस गए, फिर आए। तो वो बहुत सारी नमाजें, 40 नमाजों से कम होकर 5 पे आ गई बात, बिल्कुल सर। ठीक है ना। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं जाता, बस 5। और फिर वो सारा बातें हुई और बहुत तशरीफ ले आए। मतलब ऐसा जरा पढ़ के जाए, ऐसे नहीं। जी सर। आज पाँच जवाब बिल्कुल नहीं देना। सीरत नबी पे कोई बुक पढ़ी है आपने? सर तफसीर इब्ने कसीर और एक किताब थी इब्ने माजा की। ये सर बस वो सीरत नबी पे है। सीरतुल नबी पे सर एक 2 किताबें और थी आप सर उनकी। इब्ने खतीर थी, मुझे सर नाम भूल गए, लिखे थे मैंने सर। बेटे बात सुने, ज्यादा रकीम बड़ी ज्यादा किताबें पढ़ने की। आप जो बीए की प्रेस्क्राइब कोर्स में है ना वो किताब, बीए के प्रेस्क्राइब कोर्स में जो इस्लाम बुनियाद है, वो पढ़ें तो भी शायद उर्दू में पढ़ लें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कौन सी बुक इस्लामिक स्टडीज की आप फेवरेट है आपकी, या कोई पढ़ी है जो आपको याद हो, जिसमें से हम बात कर सकें? सर एफएससी में पढ़ी थी सामने आती। ये इस्लामी नजरिया हयात या ये ऐसे कुछ साहब ये पढ़ी? नहीं सर, भी नहीं। ठीक है। कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी? सभी फॉर्मली सीएसएस की तैयारी अभी स्टार्ट नहीं की नो है, इशू, तो नो इस इशू। इस वजह से मैं कभी परचेज नहीं किया। ऑटोबायोग्राफी कोई नहीं। मैं बाकी क्वेश्चन सुनते रहेंगे। अभी मेरे ख्याल से 35 मिनट्स हो चुके हैं। आपके हैंड्स मूवमेंट नहीं होंगे कहीं पे भी, ठीक है। आप इसको यहाँ पे रखें, ठीक है, और इसको खोलें, ठीक है, और मतलब इजी फील है, ठीक है। और जैसे सर या मैं जब बात कर रहे हैं तो हम आपको बॉडी जेस्चर भी दे रहे हैं। तो इस तरह से आप, यस आपका आई कांटेक्ट ठीक रहा, ठीक है, बट बॉडी जो आपकी है वो मूवमेंट उसको रखें, और आपका बाकी जो फिजिकल जेस्चर्स हैं उसको भी यूज लेके आए। दूसरा सर बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जब आप बात स्टार्ट करते हैं तो सीक्वेंस में नहीं होती बात आपकी। अच्छा, वो मेरा ख्याल से ये है कि हमें जो सर जैसे सीनियर्स ने स्ट्रेटजी बताई थी, वी आर हियर टू लिसन यू, वी आर नॉट इन अ हरी, ठीक है। टेक सम मोमेंट्स, जब हम बात क्वेश्चन पुट करते हैं, टेक सम मोमेंट्स, अपने आंसर को सीक्वेंस में लिखें, ठीक है। आप क्या बात करेंगे, स्टार्ट क्या होगा एंड आपका क्या होगा, उसका सीक्वेंस कर लेंगे।
ठीक है। और ये आपने अच्छा किया जब मैंने उर्दू में बात की तो यू स्विच ओवर, अच्छा है, ठीक है। बट एक चीज थोड़ा सा सर ने भी बात की, बी आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट के साथ मैं थोड़ा सा कहूंगा उसी के साथ अटैच बी ब्रेव, ठीक है। आपकी जो वॉइस पिच है वो ऑल द टाइम टाइम जो है वो सेम रही है, ठीक है। मतलब वो उससे पता चल रहा है कि मतलब आप जो बॉडी का रिस्पॉन्स है उस पे आपने बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल किया हुआ है, वो निखर नहीं रहा जो नेचुरल होना चाहिए। सो बी नेचुरल, ठीक है। और बी ट्रू इन योर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपको बात नहीं है जैसे आप कह रहे हैं तो वेरी सिंपल सर। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, और बाकी सर प्लीज। मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि क्वेश्चन के बाद 2 सेकंड का 3 सेकंड का पाज ले, जो सर ने बात की, जी सर। उस पाज में वो आपने सोची, लंबा ना हो बेशक, 5-10 सेकंड का भी उसका नहीं, उससे आप फिर जब जवाब देंगे तो उसकी और कैफियत होगी। आप इमीडिएटली जब रेस्पॉन्ड करते हैं उसकी बात होगी। तो ये ब्रेन मशीन कर ले ये बात कि सवाल सुनने के बाद उसको समझिए, उनके बाद फिर उसकी आप बात करें। और जैसा सर ने कहा है कि फ्री फील करें। ये जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो भी आप ही का करें। और ये भी पक्की बात है कि हर सवाल का जवाब कैंडिडेट को नहीं आता। अगर नहीं आता है तो गलत जवाब देने की बजाय कहें कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 दफा 3 दफा कोई अर्थ नहीं। बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो आपका इंटरव्यू है वो आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ठीक है। यस, इट काउंट्स अ लॉट, बिकॉज जब आप बात चल रही होती है तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। आप क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है और आप उसको थ्रू कर लेते हैं, यस इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। बट इट डज नॉट मीन कि अगर आपके क्वेश्चन ड्रॉप हो रहा है तो खुदा ना खासा आपका इंटरव्यू भी लग जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस रखें और नेचुरल रहें, ठीक है। और बी ब्रेव एंड आर्टिकुलेट, ठीक है। थोड़ा सा सीक्वेंस में चीजों को लेके आए तो अ, क्या देख रहे हैं आप, कल परसों से शायद अटैच भी होंगे, इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको, प्रोविंशियल जो असेंबलीज हैं। जी सर, इलेक्शन कंडक्ट हो जाएंगे 90 डेज के अंदर ही, जो 90 सुप्रीम days. कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया इसका, और इलेक्शन कमीशन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। Okay. Was this the job of Supreme Court to decide the matter? नो सर, इनिशियली ये सुप्रीम कोर्ट का जॉब की मतलब कोई जॉब नहीं था। बेसिकली स्टार्टिंग में जब असेंबली डिसॉल्व की गई थी, प्रोविंशियल असेंबलीज, तो गवर्नर को चाहिए था कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के एक डेट अनाउंस कर दें। लेकिन क्योंकि उन्होंने नहीं की सर, तो कॉन्स्टिट्यूशनली फिर उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और बीच में जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी डेट दी थी आर्टिकल 57 के तहत, इलेक्शन एक्ट के तहत। मैं उस सर वाली बात को वापस आपको लेके चीज कनेक्ट करने की तरफ लेके जाऊंगा। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वीक हुआ और स्पेस ले ली उन इदारों ने, ठीक है। तो यही होगा, यही होता आया है अब तक कि जिनको जो रोल प्ले करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। दैट्स व्हाई ये हुआ कि इदारे जो है वो उन्होंने अपनी लिमिटेशंस क्रॉस की या जो भी हुआ, और रिजल्ट जो है वो इस तरह के। सो प्लीज। सर ये तो मतलब ये होगी ना जनरल, इस वक्त तो मुल्क के मेजर इश्यूज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सर इशू हमारा इन्फ्लेशन का है। दूसरा सर हमारा इशू लोन्स को लेके है बेसिकली। ये हमारी जो बजट डेफिसिट है वो हमारा बढ़ता जा रहा है, और हमारे पास रिजर्व में पैसे बहुत कम हो रहे हैं दिन ब दिन। और तीसरा सर, हाँ सर, दो मछली और तक जो भी इश्यूज देखिए ना, ये बड़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। पहला इशू
जो है वो आप देखेंगे कि एनर्जी क्राइसिस है, चले, फूड इनसिक्योरिटी है, पॉपुलेशन का इशू भी है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, रिसोर्सेज उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है ना, तो ये इश्यूज जो है, और बेरोजगारी है, बिल्कुल। हम फेमीन की तरफ जा रहे हैं, टैक्स की तरफ जा रहे हैं, नेचुरल हैजर्ड्स ने तबाह कर दिया है मुल्क को, पानी में डूब गया, जहां पानी दरकार है फसलों को पानी मिल नहीं रहा, वाटर स्कैरेसिटी इंतहा को पहुंची हुई है, लोग जरखेज जमीनें छोड़ के चले गए हैं क्योंकि पानी मिलता नहीं है। मसलन आप देखते हैं शिकारपुर वाली साइड में जरखेज शानदार जमीन थी, पानी नहीं है तो छोड़ के चले गए, जमीनें छोड़ के चले गए। दीज आर पॉवर्टी की इंतहा है। फिर इनवर्ड माइग्रेशन का बहुत बड़ा इशू है कि देहात से धड़ाधड़ लोग जो है शहरों की तरफ भाग रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि वहां उनकी बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं हो सकती, ना हेल्थ एड्रेस होता है, ना एजुकेशन बच्चों की, ना उनको कोई मतलब किसी किस्म की कोई एंटरटेनमेंट है, सो ऑन सो। उसकी वजह से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन है कि गंदम तो उगती है देहात में, जरूरत है शहरों में और ज्यादा आ रहे हैं, तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल का मसला है, पेट्रोल हम सारा 1/5 1/6 खुद पैदा करते हैं, 5/5 जो है वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, पैसा नहीं है हमारे पास। आज डॉलर का रेट जो है वो इंटरनेट अपना मार्केट में अंदर के अंदर जो है वो 191 291 पर डॉलर हो गए हैं, 291 पर डॉलर, 291 रुपी की वैल्यू नहीं रही। मतलब दीज आर द प्रॉब्लम्स। आप उसको सिर्फ ले बैठे, वो अकेला नहीं है, इन सारी चीजों का अहाता रखें। दीज आर द इश्यूज विच आर टू बी एड्रेस्ड। उसको कैसे एड्रेस होना है वो देखना है, उसको फिर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो जाता है, तो तगड़े होके बात करें आप। रिसेंटली जो अभी एसए का पेपर आया सीएसएस का, उसमें टॉपिक था बॉयज विल बी बॉयज, क्या मतलब है? सर इसका मतलब जो मैंने निकाला था, लीडरशिप क्राइसिस पाकिस्तान में आप फील करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम पाकिस्तान के इश्यूज को डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैं समझता हूँ मतलब टॉप मोस्ट जो है ये सारे हमारे जो इश्यूज हैं वो द रिजल्ट ऑफ लीडरशिप क्राइसिस। कैसे आप इसको ध्यान देंगे? सर क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है, आर्मी की यहाँ पे मतलब हमेशा से एक इन्फ्लुएंस रहा है कंट्री के अंदर, और आर्मी ने हमेशा इन्फ्लुएंस किए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आप इन्फिल्ट्रेट किया गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसीज मेकिंग पे भी। तो कभी सर ऐसे नहीं हुआ कि एक गवर्नमेंट आई उसने अपने 5 साल कंप्लीट किए, बीच में हमेशा मार्च 3-4 हफ्ते मार्च और ड्रॉप ही लगे, इसकी वजह से सर एक कोई गवर्नमेंट अपनी पूरी 5 साल की टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाई। तो ये ये सब जरूरत नहीं। नहीं है इसका। जब ये मुल्क बना था पाकिस्तान और इंडिया, जो फाउंडर थे पाकिस्तान के, कुदरत ने उनको मोहलत नहीं दी लंबी उम्र की। उसके मुकाबले में इंडिया में आप देखें कि नेहरू कितने साल जिंदा रहा, कहीं वो जाके मरा। मिसाल दे रहे कि जो सिंसियर लीडरशिप है हम उससे बहुत जल्दी महरूम हो गए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे यहाँ जिन लोगों के हाथ में हुकूमत आई वो कॉलोनियल पार्ट के परवरदा थे, ठीक है ना, जब उनके हाथ में आई तो फिर वो बंटवारे में जो पड़े तो असल मकसद जो है वो भूल गए। जब लड़े हिसाब दे रहे इतने स्ट्रॉन्गर तो थे नहीं, हमारी थी फिर वहीं आ जाती है हमारे को, जब वो स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन नहीं थे तो उस वक्त भी जो स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन था उसने कैप्चर कर लिया। अब उसने उसको जब कैप्चर किया तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एब्रोगेट हुआ 1956 वाला, और उस वक्त से जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ है।
वो अभी तक जो है वो आगे आगे से आगे आगे से आगे, कभी वो शायद जाहिर होता है, कभी बाकी होता है, लेकिन ये बात आप वहां करें नहीं कि ये बहुत जो है वो हमें ला रही, ये आप ख्याल रखें। मतलब आपने बात जो है वो इस तरह से नहीं किसी करनी, इदारे का नाम नहीं। अदारे का नाम इस तरह से नहीं लेते, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं कि वीकर और स्ट्रांगर इंस्टीट्यूशन की बात है। हमारी, जैसे सर ने पूछा कि क्राइसिस ऑफ लीडरशिप इसलिए है कि हमारे शुरू के वो जो लीडर थे उन्होंने तवील उम्र नहीं पाया। हुकूमत उन लोगों के, ये लियाकत अली खान ने अपना क्या जवाब में कहा था कि लियाकत अली खान ने कहा था कि मेरी जेब में छोटे सिक्के हैं। उस वक्त भी पॉलिटिशियन तो यही थे ना, ठीक है, जो कन्वर्ट थे कि पहले किसी और कांग्रेसी थे या अहरारी थे या जो भी थे, तो उन्होंने कबूल कर ली मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कबूल करने के बाद अब बात हो गए, इक़्तिदार में भी आ गए, अब वो उनके दरमियान वो रेस चल पड़ी कि इक़्तिदार का कब्जा करने की। तो उससे जो कौमी मसाइल हैं वो पीछे रह गए। हम अपना पानी भी गंवा बैठे, चीन दरिया भी गंवा बैठे, आपने देखा। और उससे उसके साथ साथ वो जब आए तो उन्होंने फिर साफ जाहिर है कि खराबी से खराबी तक होती चली गई, और फिर जो स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन था उसने स्पेस ऑक्युपाई की। इसी तरह से यार लॉजिक के साथ चले ना, आप पकड़ते हैं किसी एक शाख को, उसकी रूट से लेकर के उसको आगे लेकर जहां भी आप लेके जाना है, आप लेंगे कहाँ से मामला शुरू हुआ, कहाँ तक पहुंचा है,